डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में गेस्ट हाउस के सभागार में शुक्रवार को वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण संस्था आरण्यक ने डिब्रूगढ़ प्रेस क्लब और बृहत्तर डिब्रूगढ़ प्रेस क्लब की सहयोगिता से जैव विविधता संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वागत भाषण और कार्यशाला के उद्देश्य व्याख्या आरण्यक की रिम्पी मोरान ने की, जिसके बाद आरण्यक का संक्षिप्त अवलोकन आरण्यक जाकिर इस्लाम बोरा ने की। आरण्यक के हाथी अनुसंधान और संरक्षण संभाग के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर अलोलिका सिन्हा ने असम में मानव वन्यजीव संघर्ष परिदृश्य मानव हाथी संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी। वहीं जैव विविधता संरक्षण और मानव वन्यजीव सह अस्तित्व पर आरण्यक के वरिष्ठ संरक्षणवादी जयंत कुमार पाठक ने छोटे छोटे जीव पर्यावरण व प्रकृति को कितना प्रभावित करते हैं, इस संदर्भ में अपनी जानकारी साझा की। कार्यशाला में संवाद कर्मियों ने भी अपने प्रश्नों व सलाह को रखा। कार्यशाला के अंत में विदिशा बोरा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। So the main purpose of this workshop, we do feel our RNF does feel that every stakeholders, be it government official, the conservation organization, or the media, has an important role to play in mitigating human-elephant or human-wildlife conflict and promoting this coexistence. Through this workshop, what we intend is how media and the conservation organization can come together to garner support for conservation, use the right kind of word so that a positive story is a positive narrative is being told to the people. So most of our reports, what we see is either this many elephants dying or this many people dying out of human elephant conflict, but then there is other part of the story as well, like what the organizations like us or other organizations, the government are doing to kind of mitigate those incidents and promote coexistence. So we can bring about those stories as well, how our reporting can help in bringing about a behavioral change in the people who are affected or those who are not directly affected but can play an important role in mitigating this conflict. So that was the purpose of the workshop. Compensation scheme, गवर्नमेंट हैज compensation scheme हमारे पास है, लेकिन टू रीच आउट टू दिस दो स्कीम्स देयर आर सर्टेन बैरियर्स, और ये एक कंपाउंड इफेक्ट है कि जैसे लाइक ह्यूमन डेथ्स हो रही है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल कम एंड दे इमीडिएटली प्रोवाइड दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन मनी, बट इन अदर केसेस व्हाट वी हैव सीन, जैसे क्रॉप फॉरेजिंग बाय एलिफेंट्स, वो प्रोसेस उतना ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, एंड देयर आर अदर लेयर्स टू इट। सपोज मैं फार्मर हूँ बट द लैंड डजंट बिलोंग टू मी, so the compensation amount goes to the owner and sometimes that is not percolated in the process to the farmer. So there are complexities. I would say that what it was earlier, that has been streamlined now, but we still have a far way to reach there. I think the people know the most of these incidents happen in the remote areas, and there is a problem of accessibility. So people are not very encouraged to go कि उनका time लगता है, पैसे को भी बात है, कभी कभार they have to travel to a certain distance. So those things cumulatively kind of impact the process of claiming compensation. But through this thing, I would like to highlight that if we are not applying for compensation, we are also sending out a misinformation in context like यहाँ पे कुछ problem हो ही नहीं रही है. There are like two things: one, I'm not getting compensation, and the other that we are not sending the right kind of information to the relevant authorities about about the incidents happening. So yeah, the problem is twofold, I could say here. I think media could play a very significant role, particularly in not only in human-elephant conflict, elephant conflict mitigation, in entire conservation journey. Media is playing, significant role since Russell Carson's era through Silent Springs. So, if media could report, authentically, or media also, guide us, people like me or organization like Aranya. Also, media can guide the policymaker with authenticated information from different part of our state where elephant conflict is really high, and where in some part of Assam there is elephant conflict is comparatively low, but we can guide our particular concerned department or our